Hello learners, this is your KP sir, Krishna Prakash. So every time with respect to requirement of the students, so student को क्या चाहिए वो देने के लिए हमारा कभी भी रेडी हो जाएगा. So now there are 6 months for GATE or ESE examination. To crack your GATE and ESE examination, the most typical model of questions, rarest of the rare, twist model of questions, and very importantly, those questions can increase or improve your logical thinking, analytical skills, and get you the best rank in GATE examination. So that our target is exposing the student to GATE model of questions. हर एक दिन ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको. Every day you get one question in terms of question of the day. From today onwards till GATE examination and ESE examination completed, daily one question we are going to upload in our Unacademy Accord YouTube channel. And the level of question is somewhat above GATE and ESE model. And these are not regular previous year question. Very clearly I am saying, these are not repeated questions. These are not regular previous year questions. These are not models what you learn in the classes. These are the special model, twist model of KPSR questions, which will enhance your learning experience, which will give more idea regarding twist model of questions, logical thinking questions, analytical model questions. So by solving this kind of questions, आपको समझ आएगा गेट में क्वेश्चन अप्रोच कैसा करेगा, गेट में लॉजिकल थिंकिंग कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस थिंग्स वी हैव टू डू. सो आपका पूरा का पूरा गेट और ESE एग्जाम का बारे में द मोस्ट टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, और बाय दिस your rank will be improved a lot if you attend these question solving session. And the question solving session is daily one question of the day session. ठीक है, it's question of the day session. The most typical model, twist model, logical thinking model, you can experience the best of the best questions from this question of the day. Chalo, we'll go ahead. So today we are going to start with my favorite subject, environmental engineering. Which subject I taught more than 200 batches, more than 100 batches for AEE, more than 200 batches for GATE and ESE, and more than 100 batches for other competitive exam. Means environmental I taught more than 400 times. If you take only for GATE and ESE, it is 200 batches. For a state exam, SSC JE, 100 batches. For other competitive exam, different exam, 100 batches. Overall, I have taught so many times environmental. So with my experience, and as I solved all these exams questions, with my experience and my expertise in solving all the questions, I made the best quality questions related to environmental. Today we'll go with the air pollution related question on electrostatic precipitator. So electrostatic precipitators A and B. Electrostatic precipitators A and B arranged parallelly means there are two electrostatic precipitators. A and B arranged parallelly with efficiencies of 90% and 80%, with efficiencies of 90% and 80% respectively. So A का बारे में efficiency 90%, B का बारे में efficiency 80%. Both are connected to, both combinedly connected to electrostatic precipitator C in series. See this pipes in parallel, pipes in series model. We are applying to electrostatic precipitator.
So both connected to another electrostatic precipitator C in series, where efficiency of C is given 70%. Efficiency of C is given 70%. What is overall efficiency of system? पूरा का पूरा electrostatic precipitator system का overall efficiency क्या हो रहा है? Electrostatic precipitator A. So the diagrammatic representation of the given question. Electrostatic precipitator A 90% removed, B 80% removed. So for example A से 100 particles आ रहे, 100 particles आ रहे, A से 100 particles आ रहे और B से भी 100 particles आ रहे. So 100 particles में from A 100 particles 90 रिमूव हो गया, सिर्फ 10 पार्टिकल रिमाइनिंग था, सिर्फ 10 पार्टिकल रिमाइनिंग था. B से 100 पार्टिकल में 80% रिमाइनिंग, 80% रिमूव्ड, सिर्फ 20 रिमाइनिंग. आउट ऑफ 100 पार्टिकल 90% are removed in A, 80% are removed in B. 10 remaining after treatment through A. After treatment through A, 10 remaining. After treatment through B, 20 remaining. Both combinedly entering into C. A and B both combinedly entering into C. समझ आ रहा है अभी? So from A 10%, from B 20%. A से 10%, B से 20%, पूरा 30% entered, पूरा 30% entered to C. In the 30% 70% remove हो गया. 70% of 30 removed. What is 70% of 30? 21% removed. 21 removed. 21 removed. 70% of 30 removed. So remaining क्या हो रहा है? Remaining बताओ, remaining 9%. Means 100 particles in A, 100 particles in B, दोनों मिलके 200 particles. In that, how many remaining? 200 से how many remaining? सिर्फ 9 remaining. समझ आ रहे? 100 from A, 100 from B, सिर्फ finally remaining 9. So remaining 9. So what is remaining percentage? Remaining percentage क्या है? 9/200 into 100. Remaining percentage बताओ. 4.5. But they are not asking remaining. Overall removed. Overall efficiency is removal efficiency. Removal percentage 100 minus 4.5, 95.5. समझ आ रहा है? पूरा का पूरा 100 फ्रॉम ए, 100 फ्रॉम बी, 200 रिमूव करने के बाद फाइनली रिमाइनिंग 9 हो गया. 9 इन 200 4.5%. रिमूवल परसेंट क्या हो रहा है? 95.5%. वो भी तो ऑप्शन ए में आ गया. ऑप्शन ए में आ गया 95.5%. सो ये डायग्राम अच्छे से देखो, आपका पूरा का पूरा समझ आएगा. वो डायग्राम से आपको पूरा का पूरा समझ आएगा. ठीक है? सो नाउ दिस इज द आंसर 95.5%. सो ये क्वेश्चन कैसा लगा आपका? आपका कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सो एक काम करो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड DSC. कभी भी हो जाएगा.
सिर्फ उनको हेल्प हो जाएगा वो क्वेश्चन। नॉट ओनली दिस वीडियो, हम आज से शुरू करेगा सिर्फ गेट और यूएससी एग्जाम खत्म करने तक हर एक दिन एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारा यूनिवर्सल कोड मालूम था आपका, अनअकैडमी में क्या चाहिए वो करो आप। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना होना चाहिए, प्लस और आइकनिक यूनिवर्सल कोड केपी सिविल यूज करो। फ्री टेस्ट लिखना पड़ेगा, लिखो। क्विज लिखना पड़ेगा, लिखो, केपी सिविल यूज करो। स्पेशल क्लास अटेंड करो, केपी सिविल यूज करो। स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट हर एक संडे 11 AM में कॉम्बैट हो जाएगा, यूज करो हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल। आपको पूरा क्या चाहिए वो मिलेगा अनअकैडमी में। सो यूनिवर्सल कोड केपी सिविल स्प्रेड करो आपका दोस्तों से, और कल और एक सेशन से मिलेगा। लेट्स क्रैक इट।